Assalamu alaikum students of class 7. Hope you all are fine. Today we are going to start first chapter of our first term of subject science. The name of our chapter is the digestive system. Please open page number 2 of your Oxford Science book. First students, you have to understand what is digestive system. The word digestive derived from the word digestion. And what is digestion, students? The meaning of digestion is to convert the large molecule of food into smaller molecules so that it can be absorbed in your blood. अब डाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? जब हम कोई फूड ईट करते हैं, वेन एवर वी ईट फूड वी हैव टू डाइजेस्ट इट, यानी हज़म करने को हम डाइजेशन कहते हैं. और जो वो पूरा सिस्टम होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एनर्जी और इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. Students, why we need digestive system or why we need digestion? Students, we have to perform different activities of life, and for these activities we have energy. And where we get the energy? We get the energy from the food we eat. So the food we eat is digested and we get energy from the food. Dear students, the food we eat is categorized into 5 categories. Number 1, carbohydrates. Number 2, proteins. Number 3, fats. Number 4, minerals. And number 5, vitamins. Okay, now let's understand these categories. Number 1 is carbohydrates. Now what does it mean? The food we eat in a day mostly contain what? Yes, it contains sugars and starch that give us energy. And carbohydrates are the main constituent of our food. Number 2 is protein. Protein are the bodybuilding food. That means they are the part of every cell in your body and they are needed to repair damaged parts of the body. मीन जो प्रोटीन है दे आर द एवरी पार्ट ऑफ द सेल, और यू नो इन एवरी सेल दे आर राइबोसोम्स एंड डीएनए एंड राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन आर हेल्प टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेल. Number 3 is fats. Fats are the insulation layer under the skin. Fats provide us एनर्जी ट्वाइस द एनर्जी, यानी जो हमें जो फैट्स हैं वो ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. एंड अबाउट क्वार्टर द एनर्जी वी यूज़ ईच डे कम्स फ्रॉम द फैट, यानी जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो हाफ जो है वो हमारी कहाँ से मिलती है? हमें फैट से मिलती है. मिनरल्स. Minerals describe a whole collection of elements including calcium, phosphorus needed to build बोन्स एंड टीथ. मिनरल्स आप बोलेंगे मिनरल्स का बॉडी में काम क्या है? हमारी देखें बॉडी के अंदर जो हमारे टीथ हैं, हमारे बोन्स हैं, किससे मिलके बने? कौन से मिनरल से मिलके बने? कैल्शियम से. इवन हमारे जो ये मसल्स हैं इसके अंदर कौन से मिनरल शामिल है? फॉस्फोरस शामिल है, पोटेशियम शामिल है. इवन कि इन आवर नर्वस सिस्टम पोटेशियम इज़ द functioning part and tiny quantities of other minerals. They help to keep us healthy. Number 5 is vitamins. Vitamins are essential to our health, but again we need vitamin into very small quantities. If we use vitamin into large quantity, then the disease will be occurred, or if we use in the vitamins in our diet in low quantity, then it will also cause the disease in our body. So we have to eat the vitamin at the 25 kilogram of the weight. For healthy diet we also need fiber as to keep the passage of our food through the digestive system. Water is also important for digestion. Why water is important for digestion? Because it dissolves the food, and to make up for the water the body loses
when we breathe, when we exercise, we sweating, यानी जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम स्वेटिंग हो रही होती है, हमें गर्मी से पसीना आ रहा होता है, और हमारे जो मेन जो पार्ट है वाटर का डाइजेशन के अंदर वो ये है कि जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो उसके जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं एंड देन इट विल बी excreted from the body. So water is important for digestion. Water is essential for good health. Water and other liquids help to break down food so that your body can absorb the nutrients. Water also softens stools, which help prevent constipation. If we drink less water, then constipation is occurred. Drinking water is advantageous in very way. It assists metabolism and digestion, prevent constipation, the accumulation of waste product in the body, keeps away disease, and even helps in keeping the skin clear of acne and pimples. Constipation is also occurred by drinking less water. So water is very important for digestion. Drinking water is advantageous in very ways. It assists metabolism and digestion and prevent constipation. Even it helps in keeping the skin clear of acne and pimples. So water is very important for digestion and for other metabolism activities of life. It also water is also loses in sweating, exerting, and breathing. By the help of water, we excrete harmful material from the food we eat. यानी जो हमारे फूड के अंदर हार्मफुल मटेरियल होता है, जो हम जंक फूड खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी या जो भी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती है वो एक्सीट आउट होती है. किसके ज़रिए? पहले वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है एंड देन इट विल बी एक्सीट आउट फ्रॉम द बॉडी. Students, everything we eat is made up of molecules. And these molecules are carbohydrate, fats, and proteins. And these proteins are large molecules. These large molecules cannot be absorbed by the bloodstream. And that's why it is necessary to break down these large molecules into smaller molecules. And if these large molecules like carbohydrates, starch, and proteins cannot be broken down into smaller molecules, it does not give us energy to perform the different activities of our life. So it is necessary to break down these large molecules into smaller molecules so that they are absorbed in our blood vessels. Digestion. What is digestion, student? I have told you before I have starting the chapter that digestion is the breaking down of the large molecule into smaller molecule, or the food we eat is breaking down into smaller molecule so that it can absorb in our blood vessels and give us energy. हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो भी खाना खाते हैं उसको हम हज़म करने के लिए, ताकि वो हज़म हो, हमें एनर्जी मिले, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर जहाँ हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ रिपेयर होनी होती है, हमारे पास कोई सेल रिपेयर होनी होती है, तो उसको भी वो जाके रिपेयर करते हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारी बॉडी में आपको पता है जो हमारे सेल्स बनते हैं उसके अंदर RBCs RNA होते हैं और DNA होते हैं. अब RNA और DNA का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन होता है. अगर हम अपनी डाइट में फॉर एग्जांपल प्रोटीन नहीं लेते हैं, और या अगर प्रोटीन ले रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा? हमारे पास लैक ऑफ प्रोटीन होगा और हमें डिजीज़ हो सकते हैं. So the breaking down of these large molecule into smaller molecule is very necessary, and the process is called digestion. Process of digestion. The digestion process involves breaking down of food, number 2, absorption, number 3, removal. In breaking down of food, the food
इज़ ब्रेकिंग डाउन बाय च्यूइंग इट, यानी जब हम कोई भी फूड या कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं। तो क्या होता है, वो लार्जर थिंग से स्मॉलर, थोड़े स्मॉलर मॉलिक्यूल से में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने कोई निवाला लिया, वो कितना बड़ा होता है, जब हम च्यू करते हैं तो क्या होता है, वो एक पेस्ट टाइप का बन जाता है। देन a chemical breakdown of the food using acids and chemicals known as enzymes। और जब हम च्यू कर रहे होते हैं तो वो जो हमारे च्यूइंग के दौरान उसके अंदर एंजाइम्स शामिल होते हैं और उस हमारे जो हमने फूड ईट किया है उसके अंदर उसकी केमिकल्स को क्या करता है, उसके एसिड्स के ज़रिए उसको क्या करता है, उसकी मज़ीद ब्रेकिंग डाउन हो रही होती है थ्रू द सलाइवा। They can carry out one job. Enzyme which broken down starch cannot break down fats or protein। यानी वो एंजाइम, देखिए व्हाट एंजाइम्स स्टूडेंट्स, एंजाइम्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल्स रिएक्शन को तेज़ करते हैं, लेकिन खुद पार्ट नहीं बनते, लेकिन क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। ठीक है, अब एंजाइम जो है स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक चीज़ को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर प्रोटीन का प्रोटीएज एंजाइम है तो वो सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करेगा, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। अगर स्टार्च का है तो स्टार्च का एंजाइम स्टार्च को ही ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। नंबर 2 इज़ अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल डैट द बॉडी कैन यूज। जब हम फूड को इनटेक करते हैं, उसको च्यू करते हैं और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो सेकंड चीज़ क्या होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या, एब्जॉर्प्शन इज़ नेसेसरी। एब्जॉर्प्शन क्यों नेसेसरी है? एब्जॉर्प्शन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जब हमने फूड इनटेक किया वो लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में चला गया तो उससे क्या होगा, उस स्मॉलर मॉलिक्यूल में जाएगा तो वो हमें क्या करेगा, हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड वेसल है, उसको एब्जॉर्ब करेंगी और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। नंबर 3 इज़ रिमूवल। रिमूवल इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर फूड, यानी जो हम इनटेक करते हैं फूड, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते या वो पार्ट हमारे फूड का जो हमारे लिए हार्मफुल होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो एक जगह हमारे पास एक्यूमुलेट होता है और वो क्या होता है, हमारे फूड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। सो अगर हमारे पास, आपने सुना होगा किसी की किडनीज ख़राब हो गई तो उसकी डायलिसिस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस किडनीज का क्या काम होता है, हमारी बॉडी से वो क्या करती हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करती हैं। अब जब हमारी बॉडी में रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा, हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज़ वेरी नेसेसरी इन डाइजेशन।